everyone, and welcome to today's session. I'm Meenakshi Upadhyay, and as you know, I've been training for these exams for more than 18 years now. So, today's session basically is about the CMAT and MAT preparation process, and we are going to be learning as how to, crack the exam in a better manner so that the strategies, the tips and tricks for VA and RC. That is something that we are going to be discussing today. So obviously there are a lot of many things that people would want to discuss in the session, but I would like to keep the focus on the MAT exam and the CMAT exam, what we are looking at today, because this is something which is very important, and the MAT and the CMAT obviously are going to be happening within a couple of months. So the focus has to be on that, and what to do in these days that we have in our hands so as to excel better in these exams. Now, first of all, let us look at the pattern and the chapters involved, and then we can see what all has to be done. So, as you know, that the MAT exam basically is held 4 times a year, that is your February, May, September, and December. So, if you're preparing for the February MAT, it's a good thing to start off immediately, and let us see the pattern. And just a quick reminder, I am taking a lot of live classes on Unacademy Plus. So, if you use my promo code, that is MUS73, which is there in front of you, you get a 10% discount on all the live sessions that I take and all the plus courses. So not just mine, you get access to all the plus courses if you use my promo code MUS73 for a 10% discount. So as I was saying, that the MAT exam is held 4 times a year, that is February, May, September and December. And what are the highlights? It can be accessed both in the offline and the online mode. So that is one good thing about the MAT exam, that you can give it both in the offline and online. The total number of questions are 200, and there are 5 sections. Now, what are those 5 sections? One is data analysis and sufficiency, which is your DI in the common language. Then is your language comprehension, which is your English, and intelligence and critical reasoning, which is your LR and verbal reasoning. Then mathematical skills. Mathematical skills is obviously your QA, and global Indian and global environment, which is your general awareness, your GK. So the 5 sections basically are the normal 5 sections that we see in most of the exams, which is your QA, DI, LR and verbal reasoning, and VARC together with your GK. The GK is the extra thing which is there in the MAT and in the CMAT both. So now what all has to be, how should the exam be looked at? It's a 2 hour 30-minute exam, so 2.5 hours for your exam. For each correct answer, you get a +1, and there's a negative marking of 1/4 mark. So 0.25 is deducted for, so there is negative marking in all the questions, so you have to be a little careful, not too much guesswork. And then basically, let us look at the pattern. Now the number of questions are the same in all the sections, that is 40 questions in all the sections. So 40 questions in language, that is VARC, 40 in your QA, 40 in your data analysis, that is DI, and 40 in your LR. And here DI and LR are separate sections, and the Indian global environment, which is your GK, which is your 40 minutes again. Now there is no sectional time limit. The total time given is 150, so it is 2.5 hours. Now in these 2.5 hours, you have to do 200 questions, and there are 200 marks, 1 mark each for a good, positive, correct answer. So since there is no there is no time limit, you can actually go back and forth between sections. But that is not a good idea. You should finish one section first and move forward. What you can do is, obviously you can finish a section faster and go to the next section. So like if you feel that you are going to take more time in QA or more time in RC, then you can finish 1 or 2 sections fast and go to that section and give it a little more time.
But moving from VA to QA, and then again going back to QA, then again going back to DI, you know, going back and forth is going to waste a lot of your time. So do avoid moving between sections. But yes, you can obviously change the time limit. So here the ideal time limit that we have found out usually is 30 minutes. If you give to your English VARC, that's a good time. For QA, 40 minutes is good. For DI, again 30 to 35 minutes. For your critical reasoning, that is your LR, you give another half an hour, 30 minutes. And for your GK, 15 minutes is good. Some people lessen the time in the GK, they give only 10 minutes. That is up to you. But again, as I told you, GK can be a scoring section also. If you are good in your general awareness, if you are good in your current affairs, then you can score in this section. And the cutoffs usually are 30% of your 30 to 40% of your marks. So that we will look at. So here, as you see, 40 questions in all the sections, so 200 questions overall, 2.5 hours, which can be divided into at least 30 minutes for all the sections. And in QA and DI, if you feel you need more time, you can give up to 35-40 minutes. In GK, you can give anything between 10 to 15 minutes. That is the ideal time, because 15 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा. At least 40 questions है. If you are looking at all the questions, you will also need that much time. So अब let us, and as I told you, a +1 for each, and so total number of marks is 200. So अब इसमें what is the ideal number of marks that you should be getting? So when we look at a score of say 120, that is a very very safe score. 120 to 140 अगर आपका स्कोर आ रहा है मैट में, यू आर ऑन अ वेरी सेफ साइड. जो भी टॉप कॉलेजेस मैट के हैं आपको मिल सकता है. तो 120 140 के लिए आपको कितना कितना मार्क्स चाहिए, है ना. सो ऑब्वियसली इफ़ यू डिवाइड इट ओवर योर 5 sections, so around, if we are talking about 25 marks, 25 मार्क्स अगर आपको हर सेक्शन में आ जा रहा है, तो आपको ईजिली 25 5s are 125, सो 125 आपको आ रहा है. तो आपको मिनिमम क्या रखना है कि 20 मार्क्स मिनिमम हमको हर सेक्शन में लाना है. और उसके बाद देन यू कैन increase it to as much as you want, so that your you know you can maximize your marks that ways, and you get more marks, right. So here, that is something that you can look at. And as we talked about, it's a both computer and paper based exam, so you can definitely look at giving either one in which you are comfortable. So as we discussed, around 105 to 120 130 questions is a very good attempt. तो आपने अगर 25-25 मार्क्स हर क्वेश्चन, तो अराउंड 25 अटेम्प्ट्स पर सेक्शन इज़ वेरी गुड. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा जीके उतना अच्छा नहीं, मेरा 15 ही हो रहा है, तो एटलीस्ट 15 मार्क्स पर सेक्शन ले आना है, 15 to 20 मार्क्स पर सेक्शन. और उसके बाद जितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं हर सेक्शन में, उतना आपको करना है. सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ द स्ट्रैटेजी. एंड लास्ट ईयर DILR थोड़ा सा ट्रिकी था. इवन योर GK वॉज अ लिटिल ट्रिकी. सो सेक्शनल वाइज एनालिसिस आपका क्या था? जैसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में अराउंड 30 मिनट्स अगर आप दे रहे थे, तो आराम से आपका 20+ क्वेश्चंस हो जा रहा था, 25 क्वेश्चंस हो जा रहा था. एंड सिमिलरली LR में यू वर अगेन गिविंग अराउंड 26 to 30 minutes, so you were able to do 20+ questions. In mathematics you were giving around 30 minutes, तो आपका 20-25 क्वेश्चंस हो जा रहा था. DILR में भी अगेन आप वही हाफ एन आवर देना था. एंड GK क्योंकि ट्रिकी था, इसलिए लोगों को 15 मिनट से ज़्यादा लग गया उसमें. तो वो देखना होगा आपको. लास्ट फ्यू इयर्स का आपने पेपर देख लेना है, और उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मतलब उसी तरह से एनालाइज करना है. देन as you know that there are 5 sections in the exam, so now in this chapter wise क्या क्या important है. So I'll be happy if you have to ask a few questions. आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं. So those of you who are there in the class, and please feel free to ask if you need to ask something. I'll be glad to help you. And so as I was saying that let's now see कि chapter wise क्या क्या टॉपिक्स आते हैं.
सो लाइक मैथमेटिक्स में योर ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट्स वाला जो आपका है, रेशियो प्रोपोर्शन है, अरिथमेटिक मीन है, लॉगरिदम्स है, टाइम एंड वर्क है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। योर डीआई में आपका जो आता है ग्राफ्स वाले क्वेश्चन, कॉलम ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, ये सब आते हैं। देन एरिया वाला ग्राफ्स जो आ जाता है, परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन वाला आ जाता है, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं इन योर DILR. Good afternoon, Amlan and Shravani. Yes, I'm just coming to English, Amlan, and we'll talk about that. Then in your LR and critical reasoning, what we see is your critical reasoning questions आ जाते हैं, strengthen the argument, weaken the argument, फिर only one is sufficient, like assumption statement, इस तरह वाले जो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो वाले, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन विजुअल रीजनिंग में जो बैंक पीओ वगैरह में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस, एंड अजम्पशन, प्रेमाइस, आई टोल्ड यू, असर्शन, रीजन, एंड सिमिलरली मैट्रिक्स। फिर ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन, LR वाले जो क्वेश्चंस आपके हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाले, कोडिंग, डिकोडिंग, दीज कम। इन योर इंग्लिश व्हाट यू शुड फोकस ऑन, डेफिनेटली एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन तो है ही, देन यू हैव सिलॉजिज्म्स ऑल्सो, वोकेबलरी यूजेज आता है, सो वोकेबलरी यूजेज बहुत आता है, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड मैन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये करना है मैट और CMAT दोनों के लिए, है ना, तो वो दोनों के लिए करना है आपको। येस श्रावणी, आई डिस्कस योर डाउट ऑल्सो, बिल्कुल, एंड अमलन आई कम टू योर क्वेश्चन ऑल्सो। contextual usage, जैसे कि according to the passage what is the meaning of this word, questions like that also come in comprehension. So उसके लिए again vocabulary based on that context भी आपको देखना पड़ेगा, and synonym, antonym, odd man out, analogy, fill in the blanks, ये question types बहुत भरे रहते हैं, उसको देखना होगा। फिर basic grammar देख लिया आपने, basic grammar में कभी rules आपसे नहीं पूछेगा, what they will ask you is error spotting पूछ लेगा, and they will ask you sentence correction, तो fill in the blanks with prepositions, articles वगैरह वो आ जाएगा, phrasal verbs अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो आएगा आपका, and together with it also do your questions which are based on say sentence arrangement, which is your fill in the blanks और paragraph, so fill in the blanks में एक sentence arrangement आएगा जिसमें आपके एक sentence का वर्ड एंड वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड जम्बल, सेंटेंस जम्बल एंड पैराग्राफ जम्बल। लेकिन अगर आपने पैरा जम्बल पढ़ लिया है फॉर कैट एंड अदर एग्जाम्स, देन मैट एंड CMAT एंड टिस के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या आपने को करना पड़ेगा, उसके लिए जस्ट डू द लेवल 1 डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस अगर आपने VARC से कर लिए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। बट वर्ड लेवल में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, एंड एरर स्पॉटिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। तो कॉमन एरर्स देख लेना है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, वो आ जाते हैं आपके कभी कभी टेंसेस बेस्ड, राइट। नाउ कमिंग टू एंड देन GK, तो GK में ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बिजनेस, मेजर GK, साइंस, ये सब से आ जाता है। मेजर इवेंट्स लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। GK के बारे में और डिटेल में आते हैं श्रावणी, आई विल जस्ट डिस्कस व्हाट अमलन वाज आस्किंग मी। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस RC में दो तरह के आते हैं। एक कॉन्टेक्चुअल आता है, वोकेबलरी, which I was talking about, कि according to the passage what is the meaning of this word. अभी आज ही from my Delhi center one of my children had asked me a question, like there was a book that I had asked them to read. अब उसमें एक लाइन था कि the river chummed, the boat chummed with the river. Okay, so I'll just write it down. The boat chummed with the river. Okay. Now this sentence, the boat chummed with the river, है ना, तो chummed ये जो word है, basically this word means became friends, लेकिन यहाँ पे तो friends तो नहीं बन गया है boat and river, है ना, तो boat chummed with the river, what is the meaning of the word chummed according to the paragraph या according to the sentence। तो इस केस में क्या बताएंगे, वो फिशिंग बोट था और वो रिवर पे बहुत देर से सेल कर रहा था बोट, सो इट वॉज एज इफ द बोट एंड द रिवर हैड बिकम वन। तो चम्ड का यहाँ बिकम फ्रेंड्स नहीं होगा, बट दे वर वन विद ईच अदर। तो चम्ड का क्या मीनिंग यहाँ पे लेंगे, दे हैड बिकम वन विद ईच अदर और दे वर इन सिंक विद ईच अदर,
Yeah, they were aligned with each other, they were together, so that is the meaning that we would take. But normal जो चम्ड का मीनिंग है उसका हम ब्रैकेट्स में लिखे हैं became friends. तो आपको देखना होगा उसी तरह से जैसे एक वर्ड होता है अब एजिटेट, तो एजिटेट आप अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं. एटम्स का एजिटेशन होता है एक्साइटेशन, वेरएज अभी रोड पे बहुत एजिटेशन हो रहा है अगेंस्ट सम पॉलिटिकल इशू, तो वो एजिटेशन हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन, पीपल आर वेरी एंग्री. लेकिन एटम्स तो एंग्री नहीं रहता, दे आर इन अ एक्साइटेड स्टेट. तो अगर कोई साइंस का पैसेज है और एजिटेशन आ गया, एजिटेशन ऑफ एटम्स, तो इट कैन मीन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम्स. Whereas अगर agitation आ गया in the sense of a protest or a demonstration or politics, तो it will mean something against an agitation against something, है ना, a protest against something. तो वो एक contextual inference देखना पड़ेगा. ये आपका vocabulary question हो गया. दूसरा जो inference question होता है that is based on the clues given in the passage. तो now based on the clues given in the passage, जैसे आज ही हम Unacademy अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, I was taking a session for the MAT exam and उसमें I was teaching a passage, उसमें था polar bear mothers emerge from their dens with 3-month-old cubs in spring. अब कब उन लोग निकल रहा है? स्प्रिंग में the polar bear mothers are coming with 3-month-old cubs. क्वेश्चन था when were the children born? तो पोलर बेयर मदर्स अगर स्प्रिंग में 3-month-old cubs के साथ आ रहे हैं तो when could the children have been born? Now this is a inferential question, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ था, तो क्या गेस करेंगे हम लोग? 3 month अगर स्प्रिंग में है तो 3 months पहले बॉर्न हुआ है बच्चा, तो देन स्प्रिंग के पहले कौन सा सीजन आता है? तो आपको पता है क्या होता है? विंटर होता है, उसके बाद विंटर अभी जो मौसम है नवंबर दिसंबर जनवरी, देन स्प्रिंग इज योर फरवरी मार्च अप्रैल, देन स्प्रिंग के बाद आपका समर आ जाता है विच इज़ योर मई जून जुलाई. इंडिया में हम लोग रहते हैं तो रेनी सीजन भी आ जाता है जुलाई अगस्त, लेकिन नॉर्मली समर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में ऑटम आता है. ऑटम इज योर when the leaves fall, so autumn season. और autumn के बाद फिर क्या आ जाता है? अगेन winter. तो अगर 3 month के cubs हैं spring में, तो spring से 3 months पहले कौन सा season था? So then we will write what answer? We will write the answer as, tell me, that is your inference. So we will write the answer as winter, है ना? Right, when were the cubs born? If the polar bear mothers are coming out in spring with 3-month-old cubs, the cubs have been born in winter. So this is your inference. Inference का कभी direct answer आपको नहीं मिलेगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा उस केस में? राइट अम्लन, so give the right answer. तो उस केस में आपको जो clues दिया रहेगा, based on that you have to find the answer. ठीक है ना? तो एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा. लेकिन अब आप उनके बारे में ऑटम और समर के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग को 3 months का क्लूज दिया इसलिए बस वही बात करेंगे. उसके बाद उसी पैसेज में लिखा हुआ था कि इफ देर आर 3 cubs, तो इफ देर आर ट्रिपलेट्स ऐसा लिखा हुआ था. ट्रिपलेट्स मीन्स 3 children. पैसेज में लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, और एक ऑप्शन था द बेयर्स ऑलवेज गिव बर्थ टू ट्रिपलेट्स. So can this be inferred? Yes or no? Tell me. The bears always give birth to triplets. Can this be inferred from the passage? The passage was saying if there are triplets. So can this be inferred that the bears always give birth to triplets? No, it can't be, Vishal. Why? Because पैसेज में क्या लिखा था? इफ देर आर ट्रिपलेट्स मीन्स अगर 3 बेबीज हुए तो अगर 3 बेबीज का क्या मतलब है कि हमेशा 3 बेबीज होंगे? नहीं होंगे ना. तो ये इफ वाला वर्ड अगर आप मिस कर गए और पूरे पैसेज में ट्रिपलेट्स के बारे में लिखा हुआ था तो कंफ्यूज होके हम लोग सब येस मार्क कर देते हैं, द सेम मिस्टेक दैट यू डिड. सो इन्फ्रेंस में आपको देखना होगा कि क्लूज क्या दिया है. उसमें लिखा था कि इफ देर आर ट्रिपलेट्स देन जो सबसे छोटा बच्चा है वो जल्दी मर जाता है.
तो अगर इफ लिखा है इसका मतलब अगर 3 बेबीज हैं तो अगर लिखा है तो वो ऑप्शन ओपन कर देता है ना कि हो भी सकता है 3, नहीं भी हो सकता है। तो हमेशा हम नहीं इन्फर कर सकते हैं दैट दे ऑलवेज गिव बर्थ टू 3 चिल्ड्रन। दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन कैट एंड जैट विच कंफ्यूज यू, विच आर इन्फरेंशियल, और उसका आधा क्लू दिया रहेगा और आपको इन्फर करना है। अगर पूरा क्लू नहीं है तो हम इन्फर नहीं कर सकते। हम बोले कि द रूम इन विच आई एम सिटिंग इन हैज़ एन एयर कंडीशनर, तो आप फैन के बारे में बोल सकते हो क्या कि रूम में पंखा भी है? नहीं बोल सकते हैं ना। क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज उसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बोलें कि आई एम लिविंग ऑन द 20th फ्लोर and the floor above me has some construction going on, so you can hear some noise today. So can you infer that there is a 21st floor in my building? Yes or no? Tell me. I am saying that I am living on the 20th floor and the floor above me has got some construction work going on. So can you infer that there is a 21st floor in my building? Now you can infer yes. Why? Why can we infer this? Because I am living on the 20th floor और हम बोल रहे हैं कि द फ्लोर अबव मी में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका मतलब 21st फ्लोर तो डेफिनेटली है। अब 22nd है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन 21st डेफिनेटली, ये इन्फरेंस आप कर सकते हो। तो इन्फरेंस विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द क्लूज दैट आर देयर, है ना? राइट विशाल? सो दैट इज हाउ। सो अमलन, आई होप इट इज क्लियर एंड टू ऑल द अदर्स ऑल्सो, श्रावणी, अमलन एंड विशाल, आई होप ये इन्फरेंस कैसे करना है ये आप समझ गए हैं। सो यू हैव टू गेस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू थिंक, है ना? हाँ, कंस्ट्रक्शन गोइंग, वर्क गोइंग ऑन अबव द 20th, इसका मतलब 21st फ्लोर या तो बन तो रहा ही है। कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन द अबव फ्लोर, इसका मतलब 21st फ्लोर है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना? राइट। तो बस यही डिस्कस करना है। तो लेकिन अगर 21st के बाद 22nd के बारे में आप कुछ नहीं पता है अपने को, तो उसके बारे में हम लोग कुछ बात नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज समथिंग विच वी विल हैव टू लुक एट। ओके, सो देन एज राइट, सो नाउ श्रावणी, एज यू वर आस्किंग अबाउट कि जीके में क्या करना है, तो जीके में नाउ यहाँ पे देखिए जो टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पढ़ना है, तो वो हो गया आपका वर्बल रीजनिंग, सिलॉजिज्म्स। वर्बल रीजनिंग में स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड मैन आउट, एनालॉजी, जिसमें क्या होगा, कैट इज टू डॉग एज डॉग इज टू पपी, यू नो दैट काइंड ऑफ। देन जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड पैराग्राफ्स, पैराजम्बल, सेंटेंस जम्बल, वर्ड जम्बल, तीनों आता है। फॉरेन लैंग्वेज कभी कभी आ जाता है वर्ड्स, नॉट ऑलवेज, बट रूट वर्ड्स एंड ऑल आ जाता है, तो वोकैबुलरी कर लेंगे, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स कर लेंगे, स्पेलिंग कर लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। से इफ़ यू हैव माई बुक, आई डोंट नो वेदर यू नो, I am very famous for a book, verbal ability, reading comprehension for CAT, which I have written. So if you have, उसका 3 word list है, उसका VA का section अगर आप कर लोगे तो that is enough for all the non-CAT exams. उससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, just have to do the level 1, है ना? एंड देन जीके में जो आपको पढ़ना, अब जैसे आपका ये क्रिटिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंस, वो आपका एलआर वाला जो है, तो फैमिली ट्री, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, कोर्सेज ऑफ एक्शंस, पजल्स, पाई चार्ट, ब्लड रिलेशंस, ये सब आपका एलआर वाला जो टॉपिक्स है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देन मैथ्स में तो आपको पता ही है द बेसिक क्वेश्चंस दैट आर देयर दैट हैव टू बी लुक्ड एट। सो कमर्शियल मैथमेटिक्स, आपका नंबर सिस्टम्स, ratio, proportion, HCF, LCF, etc. Then data sufficiency में all the graphs and charts. Now GK में क्या क्या, current affairs, business GK अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ब्रांड एम्बेसडर्स और वो सब आता है, ग्लोबल वाला भी, इंडियन वाला भी, CEOs, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स एंड ऑल दैट, वो आता है काफ़ी। देन बुक्स एंड ऑथर्स आता है, ये आपका स्टैटिक जीके हो गया। देन पंच लाइन ऑफ कंपनीज, है ना, टैग लाइन्स ऑफ कंपनीज, लोगोज, ब्रांड एम्बेसडर्स एक्सेट्रा, कोटेशंस एंड हु हैज सेड दिस, मैच द फॉलोइंग आ जाता है। देन ज्योग्राफी में कौन सा कंट्री है, कैपिटल है, कौन सा रिवर था, कौन सा माउंटेन था, वो आ जाता है। सोशल इश्यूज आएगा टिस में आपका, तो टिस, somebody was asking, श्रावणी you were asking about टिस, सोशल इश्यूज टिस में आएगा, और XLRI में भी आ जाता है कभी कभी उसका क्वेश्चंस। सो सोशल इश्यूज, लेबर लॉज, वो देख लेना होगा आपको अच्छे से, बिकॉज दैट कीप्स कमिंग ऑल द टाइम। सो लेबर लॉज, सोशल इश्यूज हमने देख लिया, एंड देन वी विल लुक एट
the finance 5 year plans देख लिया, corporate news देख लिया, mergers, acquisitions etc. entertainment industry का awards and all देख लिया, sports का भी awards आ जाता, politics में भी अभी जैसे कोई नया state हो गया है, नया bill हो गया है, ठीक है. then science related basic आपका जो है discoveries, inventions and all that वो देख लेना होगा, because these are the things from which the questions come. and then जो CMAT का pattern है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग. CMAT का again the total number of questions here, quantitative aptitude एक section है, then logical reasoning LR आपका है, then QA and DI एक साथ आता है, LR अलग आता है इसमें, and English एक साथ आता है, VARC and GK. So there are 4 sections so here as you see there are 4 sections here, and you have got your QA DI together, LR separately है, language English language and GK. So you have 25, so 100 questions. 100 questions are there, and you get a +4 and a -1. So a +4 and a -1 for each, and total marks here are 400 marks. So again इसका 50% अगर आप 200 ला रहे हैं तो you are on a very very safe side. 200 plus अगर आप ला रहे हैं, 3 hours का पेपर आपका आएगा. It's a computer based exam. The syllabus is very similar to the MAT exam अभी जो हम लोग डिस्कस किए. It is going to be the same, and you again have to look at a 200 plus scores. So there are some good colleges which are there through the CMAT exam and through the MAT exam. Try to score the best of your ability so that you can manage it that ways, and time enough रहेगा आपको. 100 questions, 3 hours है, so you have around 40 minutes easily for each of the sections very easily, और बाकी का time आपने GK में दे देना है. and again गेस वर्क थोड़ा अवॉइड करेंगे, जो श्योर हैं उसी में मार्क करेंगे. 50% एटलीस्ट अटैम्प्ट करिएगा. सो आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चंस मेक श्योर दैट यू आर अटैम्प्टिंग एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस, है ना. तो अगर आप 15 क्वेश्चंस हर सेक्शन में से कर लेते हैं तो दैट शुड बी गुड. अगर इफ़ यू कैन अप योर अटेम्प्ट्स टू 70-75 क्वेश्चंस, दैट विल बी वंडरफुल. देन क्या हो जाता है कि you are in a very very safe zone and there should not be any problem whatsoever. So that is something that you have to look at. And just a quick note about myself, I am Meenakshi Upadhyay and I have been training for the CAT and other exams for more than 18 years now. I am also very well known for a book, Verbal Ability Reading Comprehension for CAT, which I have written. So you can attend my sessions online on the plus courses on Unacademy, and you can use the promo code MUS73, this code, and you will get a extra discount for 10% if you attend if you use my promo code. And I am launching a new course for CAT 20 on January 1st. We are launching, Arun Sharma and I are launching it together, so you can go for that course. For group discussion interview also I am launching a course that is from January itself. So you can again use this promo code MUS73 and get the extra discount for those courses that I am launching, and you will get access to all the other courses also. If you subscribe for the Unacademy for a month or 2 months or 3 months, you get access to all the courses that are there on the platform. So please don't forget to use my promo code for the extra discounts, and do come for the sessions. I'll be glad to help you. And we have special classes also on the platform which are free of cost. So those sessions are also there, and there are many more which you can attend. So GK for CMAT, Mahen Patil, you have to focus on these chapters. I have just talked about GK. आप 2 मिनट पहले का रिकॉर्डिंग देख लेना, वैसे आपको दिखा देते हैं हम आपको. The topics है आपका, topics that are there in your GK are these. So quickly I'll show you again once. This is your current affairs, आप 1 साल का देख लो. बिजनेस GK देख लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो अवार्ड्स वगैरह, टॉप ऑफिशियल्स, चेयरमैन, CEO, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक GK से आपको मिल जाएगा. तो कोई भी वो वाला जो आपका है कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू वगैरह से स्टैटिक GK पढ़ लिए. पंच लाइन, टैग लाइन ऑफ कंपनीज, हिस्ट्री के वॉर्स वगैरह, 5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमी, बजट देख लिया, सोशल इश्यूज़ थोड़ा अभी जो करंट प्लान्स आए हैं वो देख लिया, गवर्नमेंट का कुछ चेंजेस हुआ है तो वो देखना है.
एंड एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, साइंस, ये आपका जो स्टैटिक जीके है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा वो देख लिया. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज, टैगलाइन, पंचलाइन, सीईओज, ये देख लेना है. ठीक है ना. सो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द थिंग कम्स. एक साल का करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, दैट शुड बी इनफ. अवार्ड्स वगैरह भी लास्ट 1-2 साल का देख लीजिएगा. ऑल राइट. So that is all for today. So thank you very much for attending the session, and we have special classes also which are free of cost on Unacademy. Please attend that, and the plus courses also. So thank you. I'm launching my fresh courses in January. I hope to see you there, and all the best to you for your exams. Thank you, and bye bye. All the best. Good luck for your exams.